at this moment, because previously I was using the थोड़ा सा वो ऑफ अपने माइक जो है जरा ऑफ कर लें ताकि माइक तमाम ऑफ माइक ऑफ कर लें प्लीज सैफुल्लाह आपका माइक ऑन है सैफुल्लाह माइक ऑफ कर दें ओके दैट्स गुड ये just स्क्रीन पे पावर पॉइंट वाले ये स्लाइड आपको नजर आते हैं यस सर ओके चलो मैं ये उस व्यू में नहीं जाता स्लाइड शो में just a short discussion from here from these slides या मैं अगर वो complete show अभी ऑफ कर दूं दोबारा मैं ऑन कर देता हूँ उस स्लाइड के लिए present now still wait a minute पहले ये विंडो आपके साथ शेयर हो जाए ओके and okay now slide show is on Osman yes sir okay that's good okay the main reason why selecting Zotero because it is free of cost a line available and a light tool you can say software and the errors what I have found in the EndNote and Mendeley they are comparatively less in Zotero. So and it automatically within seconds will solve the problem of your different sources as well as generating your automatic list of references. And at any moment if you want to change the references style both in citation as well as in the list of references that will be a job of 1 second, just a job of the click. You can opt for any style using these kind of tools, Zotero, EndNote, Mendeley, or RefWork. There are so many others, these kind of the citation and references managers. But its limitation is it provides around about 300 MB backup, but we don't need that much backup for this Zotero because we have to bring different titles from aligned sources, from Scholar Google, or from exact the link of the article or the book or the report if it is just open in the Google. So from that moment, from that page, we can link or we can export the reference to the Zotero. So वो हमारे लिए we don't need that much heavy backup or the data needed for saving the lot of data in the background. वो नहीं चाहिए हमें इसलिए कि हमें इसके सिर्फ लिंक को जो है export करना है, not the complete PDF or to be linked here to avoid the limits of the Zotero. And as it is a free software, so sometimes there might be minute error. I have not like big issues in the use of it, but minute error can manually be then corrected. Agar free हमें मिल रहा है, we have not to pay for that, and the main problem can be solved with the help of it. Some minor issues can be solved in it. Okay. So you can download the Zotero. You can just Google it. Just open the browser. Anyone, just the Firefox, or we are using the Chrome, and write Zotero. It's link. Okay, you can download it from the link. And there is a need to install an extension for this Zotero with the name of install Zotero connector. So you can search with Zotero connector. So Zotero connector and Chrome, it will be available like this. Click it and it will be installed and it will become an integrated part of your browser.
And if you are not using the Chrome, you can also search the Mozilla or Firefox. Just write the Zotero connector. So there will be its add-on. You can download, and that will become an integrated part of your website. And I will show you how it will help us later on when actually we are connecting on, when we are exporting different sources from the web to the Zotero and then to the word page. And once you have installed Zotero, it will automatically generate a tab in your or a menu and your word page. You can see here Zotero tab is available, our menu is available, and once you click this menu, it will open this part from where we can add citation and from where we can add the list of references, what they have shown bibliography. And from here we can select for the style of references. What style is preferable for you, that will be available within the document preferences. Later on I will show you practically. Okay. And once you have installed the connector, Zotero connector, so you will see here different symbols in different browser. In Chrome, you might see here the Z symbol or a folder symbol. And sometime if you exactly opening a page of the book or a page of the article, it will show here a page, like a word page, it will be shown here. So a book symbol, a Z symbol, or a page symbol, this is for what if we are searching something and automatically that can be exported to Zotero. Okay. And this is the shortcut icon from your desktop or from your program menu. And once you open it, it will looks like this. But here I have exported different article in this. That's why it's looking very heavy for you. When I will be starting, it will be blank here. But this portion is showing different libraries which you will create for collecting different references, resources from online sources. Okay, and here once you click that library in which you collected different resources, that complete list will be shown here. If there are, and if you click one source or one article or book or report from this, its complete information will be available in this panel. Okay, the metadata of a single resource is available here. So it also provide you an opportunity if there is some error during exporting a resource from web to the Zotero, you can have the chance to correct it here. You can subtract the author, you can add the author from here. You can add the number of pages or volume number, the issue number, and all of material they can have here. And you can add your resource manually from here from this symbol. I will show you later practically. Let's start practically, because what I'm showing here, if it is practical, that will be good. If you are agree that I just go for practical demonstration and all these things are available, just you go ahead, and if you have the problem you can ask me later on. It's okay for everyone that I practically demonstrate the software. Yes, sir. Okay, sir. So I will first stop the presentation and then I will start it again with the complete sharing the screen. Okay, now I hope the screen is available to all of you. Yes, sir. Is Visible. that the case? Yes, sir. Okay. If screen is available, then let's start. I'm just starting from the scratch. And I have already asked all of you that please install Zotero. Might be some of you have installed it and have a little bit practice on it. But if not,
I'm starting from the menu. You can just click it once you have installed it from your desktop, but I'm just starting it from uh, my main program list, searching list. Is the symbol of Zotero. You can just start it from the desktop here. Now, can everybody see this open windows or panels of Zotero? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Just let me start with a new library and just linking different resources from different online like Google Scholar or different other catalogs. We can say databases or straight away from the page of an article or a book. So how can we start with to look this area is a blank because this is now my repository is already available. You can see here the uh, folder plus symbol. Okay, so just collect here, click, and here is enter a new name for this collection. So I'm just for practice my new collection. Okay, or my research. चलो एक नया नाम मैं देता हूँ because previously I have already mentioned my research. Just the name of a library in which I want to bring different resources for connecting the same to the word page. Okay, and now you can see this library has developed. Just one person make sure that you are just watching the cursor आपको नजर आ रहा है जो कि मैं different जगह पे Yes, move sir. कर रहा हूँ. Yes, sir. आ रहा है Okay, मुझे सर. so research library has been developed and now there is blank panel. Okay, nothing is available because I'm a new researcher and I have nothing so far, no repository, no link with the different information from different sources. So for me, it is very fresh. So how can I brought to fill the information here? Let me go first to the Google Scholar. Scholar Google. Okay. Now any we can say article we can search here with a keyword like let's say rich structure assessment design, for example. So let's see. So now we have books or we have the article in our front from Google Scholar. If somebody is interested that yes, this is the title in which I am interested, you can write your own title, whatever your one is. But this is just for example. What we have to do for this like reliability base, मैं ये करना चाहता हूँ. So simply what I will do, here are the two commas. If you can see, just one person confirm, can you see these double quotation, inverted commas? Yes, sir. Yes, sir. Just click this, and after clicking you will have different option for different software. Like you can see the EndNote, this BibTeX, RefMan, RefWorks. So our Zotero is compatible with RefMan. So clicking those two commas for the relevant article you want to include in your library, and then come to this portion and click RefMan. And once you click, it automatically exporting. Okay, like you can see here, a pop-ups open, and it asks you in which library you want to save this title, this research title. So you can see I have other libraries, but specifically for this class I have developed my research as a library. So yes, okay, click this and then done. And to make confirm it, go back to Zotero, and now you can see here that article has been included in your library, into your Zotero library. Okay, another way, if I want
to bring, sorry, page thoda sa ye hai. If I want to bring all the available contents of this open page, so as I previously mentioned, it now shows folder instead of a single like Z icon or like a page icon, because I want to transform all these articles to Zotero. Then I will click. You can see just bringing the cursor on this menu, or you can say icon, it shows save to Zotero. Click it, and it asks you what are your intended articles or titles you want to include in Zotero. If you are interested in all, select all. Okay, and then click OK. And then it will ask where you want to save it. I want to save it in the research, not like I have other libraries, but I'm interested in my research. Okay, and then done. And then go to Zotero to confirm it. You can see now that it will come. Now the starting, coming. So this was the list available on that page. So all are now available in my Zotero library. So this is the one way how can I bring different titles are exporting from this Scholar Google Scholar page to Zotero. You can have your own choice, just keywords like if somebody is in transportation models. So when you just look for this, you will have different books, different articles. But let me just export one article from this domain. Like you can see new, old, whatever you like, complete, you can just export here, just clicking this folder. But might be all are not of your interest. Just if you remember exact title, just paste that title here from Google. Okay, or otherwise you can search with the keywords. And once you have found it, just then, for example, this article I want to export, this double commas click. Refman is the understandable format for the Zotero. Click this, and after clicking it, it will ask where you want to save it. In my research, we have created a new library, and just go down, and this library is already checked, done, and it automatically now exported to Zotero library repository. Okay, another way, you are searching journal Google page, and somebody just from water resources, they are looking for water resources models. Okay, this a random title, and now we have different titles available on this page. Now you can see the icon has been changed. The same Zotero is there. Sometime it was like a folder, now it is like a page. But this, there is an article, like by default an article has been opened. Let's click it. The proper way is before clicking it here, it will just see your whole page in which I am not interested. For example, I'm interested in this article. Click this article, and once its page is open, the journal page open, now export it from here. Now you can see the icon has been changed, like you have opened the page of the journal. Now it has an icon in open book. Just click it, and it will ask you where you want to save it. I want to save it in the library, my research. Okay, and done. So it will be linked there, but it was showing its PDF version, so it will link your PDF even. But majority of the time we are not interested in PDF. Even you can do like select it, right click, and right click will show you Zotero connector and save to Zotero. It will, and here click, and again it will ask you where you want to save it. Okay, so there is R. If I'm going back, the title is here. Click on the title, right click, and Zotero connector, save to Zotero. Click this, and you can be connected to uh, your repository. So better is that open the journal article page
and then a book will open and just connect it. But if you want to avoid its PDF, then the Scholar Google is the better choice. How can I do this? Just open this page. It will be easy if I'm not interested in the PDF of this title, and only the title I need. I have already downloaded in my other file in other repository of my computer, so I don't need its PDF and Zotero. Copy this title and go to Google Scholar and paste your this title and search. And exactly this article is available in which I'm interested. So just click these two commas and refman. It will bring all information what you need to insert in the word page in the form of citation, as well as to create the references list. It will do its job after clicking refman. So it will be easy just to transport or just to export the complete information of the title and not the PDF of the title. Okay, so I think everybody is just okay. How can we export the resources to the एक्सक्यूज मी सर, Zotero? जी सर मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। हाँ हाँ, तो सर ये गूगल क्रोम में भी इसी तरह काम करेगा जो आपने तो अभी मोज़िला मेरे ख्याल में खोला है। नहीं ये मेरा, हाँ मोज़ेला में है, क्रोम में भी ऐसे करेगा। अगर मैं क्रोम में चला जाऊँ अच्छा, तो ओके, अगर आपकी और अच्छी, ऊपर जो एक्सटेंशन है वो भी एक्सटेंशन हाँ ये खुद Zotero के साथ आ जाएगा या डाउनलोड करना बिल्कुल आ होता है? जाएगा। मैंने दोनों में इंस्टॉल किया। तो लेट मी ओपन ए क्रोम पेज। यहाँ पे मैं कोई टाइटल लिखता हूँ, लेट वाटर रिसोर्सेज, एक मॉडल रिसोर्सेज मॉडल्स, मैंने ये लिखा। ये देखिए ऊपर ये जी आया था। इफ यू, अगर मैं एक नहीं, ब्लैंक वो ओपन ये करूं, इंस्टॉलेशन ये Zotero पे इंस्टॉल इंस्टॉल करने से ही आता है या अलग एक्सटेंशन होता है इसका? अलग एक्सटेंशन है। आप थोड़ा सा लेट अगर ज्वाइन कर गए, इसका नाम है Zotero कनेक्टर। ठीक है मैं फिर, ठीक यहाँ है पर सर, लिखता हूँ Zotero कनेक्टर। ठीक है बस आप ये लिखें ठीक है, हो सिंपल। जाएगा सर। अच्छा, लेकिन चूंकि मेरा इंस्टॉल है तो यहाँ पे वो कुछ और शो करेगा। ये है आपका Zotero कनेक्टर। ठीक है सर, ये क्रोम एक्सटेंशन है, यहाँ से एक्सटेंशन। तो इधर ठीक है, राइट हो साइड गया समझ। मेरा इंस्टॉल है तो बिल्कुल, आपका आ जाएगा इनटू क्रोम। ठीक ओके, है, पता है सर, पता है इस तरह होता है। अच्छा जी। वंस ये हो ठीक है गया सर, ना, तो अगर आप ब्लैंक पेज ओपन करेंगे तो यू विल सी हियर दिस जी सिंबल, दिस इज फॉर Zotero is online, जी सर, ठीक है, right? But if you ठीक है सर। open some title, like I have opened this title, right? So now you जी, can see here that symbol is like a page. But यस once सर, you go ये सारे inside, पेज को करता है सर, ये बाकी तो समझ आ गया मुझे सर। वो हो जाएगा, या शायद इसमें जी वाला जाए। तो ये देखें, इसका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जी तो सर, you can just click it and it will link all this information into Zotero. ये यहाँ वहां पे एक्सपोर्ट कर देगा इसको। Now you पीडीएफ can में see करेगा this ये is भी। an open book symbol, right? ठीक है सर, Now the same title, if I'm just looking through Google Scholar in Chrome, तो वो मुझे किस तरह लगेगा? ऑलमोस्ट ये सिंबल ही चलेंगे। गूगल स्कॉलर में मैंने वो टाइटल किया। ओके, दिस टाइटल एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग वो फॉर। फोल्डर नाउ की दिस तरह होगा। double commas or ref man, click कर लें, it will connect the all information, will export all this information to Zotero. ठीक है सर। It's okay so far? यस सर, सर समझ आ गई, सारी समझ आ गई। बस ये एक्सटेंशन का और ये जो है क्रोम का वो पूछ रहा था, सिर्फ ये दोनों में होता है, ये सिर्फ इसमें होता है? ठीक है, अभी थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड। हमारी एक लाइब्रेरी बन गई, ठीक है। ये लाइब्रेरी आप बनते जाएंगे, आपका रिसर्च यू विल इन कंटिन्यूएशन, एंड आप लाते जाएंगे। लाइक यू कैन सी माय लाइब्रेरी, आई हैव अ गुड सम ऑफ लाइब्रेरी। मैंने इन नोट से भी इसमें एक्सपोर्ट किया हुआ है। सो इफ समबडी हैज यूज्ड सम अदर दिस काइंड ऑफ मैनेजर्स, मैं वो तरीका भी बता सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यू माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट। सो लेट जस्ट फॉलो हाउ कैन वी डील with the current resources we have brought in Zotero. Now open सर a सर एक जी क्वेश्चन। जी जी। सर ये लास्ट में जो दो ये बुक आपने डाउनलोड कर दी ना,
इसमें आपने पीडीएफ की कोई बात कर दी है, वो मुझे समझ नहीं आई कि पीडीएफ आप अवॉइड इस तरह कर लेते हैं। ये है कि जो एग्जैक्ट आप पेज सर, ये तो नाउ आई मीन स्कॉलर पेज, यही टाइटल हमारा वहां पे था, तो वो दिखाई ऐसे रहा था कि वो पीडीएफ पिक कर रहा है, इसलिए कि सेव जब हम लगा रहे थे तो वो शो हो गया। सो लेट्स सी, ये टाइटल अगर मैं दोबारा यहां से ओपन कर लूं, ये पीडीएफ इसका एक्सेसिबल है, ये तो डाउनलोड हुआ, सॉरी। अच्छा अच्छा सर। एक और मैं ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सी। आपका क्वेश्चन है, तो वी आई एम गोइंग थ्रू द क्वेश्चन। ये जिस तरह एक पेज आया ना, तो नाउ Yes, स्ट्रेट sir. अवे लाइक जस्ट क्लिकिंग दिस सिंबल, ये सिंबल चेंज होते रहेंगे, Yes, sir. एंड इट्स आस्किंग, नाउ यू कैन सी फुल टेक्स्ट पीडीएफ ये शो कर रहा है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा। कैन यू सी दिस? Yes, sir. Can you see this? So what will be Yes, the sir. Yes. problem for us? We are not interested in its PDF to be exported to Zotero. तो हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन ये अच्छा है सर। कि सिर्फ इसका जो है इंफॉर्मेशन हमारे Zotero में चले, पीडीएफ हमारे साथ भले किसी और फोल्डर में मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो Yes, उसके sir. लिए ये टाइटल कॉपी करके आप उसमें कर लें, गूगल स्कॉलर में सिंपल इसके इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कर लें, ताकि वहां पे जगह जो है आपके साथ खाली रहे। वो जो 300 MB है, हम उसका ख्याल रख रहे हैं, so that will be the case. Okay? अच्छा सर, जो एंड नोट में है उसमें ये 300 MB वाला मसला नहीं है, तो उसमें हम अपनी हाँ, लाइब्रेरी में ये पीडीएफ नहीं, रख लेकिन वो सकते हैं। फ्री नहीं है, उसमें क्योंकि वो मैंने यूज किया है, उसमें मसले बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसके मुकाबले में। अच्छा सर, फिर ठीक है, हो गया ये सर, फ्री ऑफ थैंक कॉस्ट है। यू। ओके सर, हाँ हाँ, थैंक यू सर। चलो ये पॉइंट हो गया। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्टेप। I'm just opening a word page. Just now the word page is open. Wait for it to open a word page. Okay, just go with the. Now this is our word page, blank page. Oh, now you can see the icon of Zotero. Everybody just can see this? Yes, sir. Okay, and once I click this tab or this menu, you can see it opens other options, right? Now, when I'm writing something, okay, just I have started to write my introduction, because your first assignment is to write 2 to 3 paragraph introduction using Zotero, citation and developing the automatic references list. वो इसी पे है, और वो आपको 5:30 बजे पहुंच जाएगा, वो मैंने schedule किया हुआ है। Before starting, to start writing, you have to select what format you have to follow for citation and for references. So that can be done from here, documents preferences. Can you see a window is open? Just for confirmation, one person can told me, Yes, sir. once I click the document preferences, a new window opens. Yes, sir. And by default here will be very limited number of different journals or different formats, okay, which might not be of your interest. मैंने अपनी उसका water का बहुत सारे इसमें किए हैं। Let introduce one other style, ताकि आपको समझ भी आ जाए कि नया स्टाइल कहाँ से ऐड करना है। Can you see this manage style? One person Yes, sir. click this and go to Zotero, वो blanking कर रहा है नीचे से, and it opens another window, and another window shows get additional styles. Click this get additional styles, and now for example, a structured student is interested in different journal article formats. हमने वाटर के काफी सारे डालें, तो इसमें कोई कीवर्ड लिखें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर से रेलेवेंट डिफरेंट जर्नल आर्टिकल्स जो है, जर्नल्स नाम आ जाएंगे। आपको अपना प्रोफेसर आपको कौन सा वो रिकमेंड कर रहा है, द स्टाइल यू वांट टू राइट ड्यूरिंग द थीसिस और व्हाटएवर। सो लेट आई एम जस्ट एडिंग वन स्टाइल, न्यू स्टाइल, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, एक जर्नल का नाम है। इसको क्लिक कर लें,
and it has to be added in the new style. तो मैंने click कर दिया, double click मैंने कर दिया, and now after ये आ गया इसमें. Can you see this engineering structure now is part of the styles? Yes sir, देख रहे हैं. Yes, sir. Okay. Once it is available, your choice, आपकी choice का आप इधर ला सकते हैं. If available already, okay. Not available, go to that style and get additional style, get additional. But your internet should be open. Okay, your net connection is needed. ये online pick कर रहा है. So we have brought it here. Now select the style and okay. ये हमने पहले से decide करना है before starting our manuscript. Now the style has been selected. अगर ये हमसे दोबारा चाहें तो we can select according to our choice. Now I'm starting the write up. There are, for example, a rough I'm writing. There are multiple models in the literature, we can say. तो कौन ये कह रहा है multiple models of the literature regarding the structures are, we can say, bridge design. So ये statement you have just taken from somewhere, okay, and you want to quote that. तो किस तरह कोड करेंगे? जिस तरह मैनुअल आप करते हैं, मैनुअल नहीं करना हमने. Now you have to follow the Zotero. यहाँ पे आके I have to cite the authors. So simple as that. Go to add citation, and it now asks at this stage what format you need to insert. Here was my new engineering structure, which was previously not available. Okay, and it opens. This is actually will come after installing the Zotero connector, this new symbol. Otherwise, it will be another format. It asks you what you want to cite here. What if you remember the title first word, type here structure. If it is available, it will come. Or if all title contains some structure word, it will be visible here from the drop down or from this list. You can see. Can you see? Like here, reliability base, which we have downloaded and we have included in our library. ये पहला मुझे नजर आ रहा है, तो मैं ये करना चाहता हूँ, इसको साइड करना चाहता हूँ. ओके, ये मैंने कर लिया और एंटर देन. तो इस जर्नल का फॉर्मेट जो है वो 1 2 3 है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी रेफरेंसेस ऐड नहीं है, तो मैं एक दो और ऐड करना चाहूँ साइटेशन, फिर मैं रेफरेंसेस ऐड करने का तरीका बताता हूँ. जस्ट गो टू अनदर, इसके साथ एक और रिसर्च टाइटल इफ वी आर इंटरेस्टेड. Let's see, we are interested in this one. If another one we want to add, just keyword कुछ लिखते हैं, ये आपके सामने आ जाएंगे. Pick of your choice. कौन से वाला आपने पिक करना है? जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं डिफरेंट ले रहा हूं, एंड ये 3 हो गए. फिर एंटर कर लें. Now automatically it is adjusting 1-3, but we cannot see so far the references list. Now this is very interesting. See, add bibliography. Now you can see this is not now your job to write it manually. ये खुद करेगा. अब आप चलते जाएं. Now one sentence you have completed, or and your writing is in continuation. Write and cite. वो चलता जाएगा. Cite while you write. So now but some models are very effective. ये कौन बता रहा है? ये कोई author है, वहां से हम कोट कर रहे हैं. I have selected 8 citation, और हम यहाँ पे आगे कुछ और स्ट्रक्चर के हवाले से हम लेना चाहते हैं. तो here will be in your हाँ, एक और चीज भी है. If you remember the name of the author, just write here as I'm writing my name. So if there are my articles, all article with my name, if they are available in this repository, they will come. So select whatever you require to include as a reference, okay, and enter. The citation has been added. देखिए ऊपर citation भी हो गई और ये automatically यहाँ पे add भी हो गया. अब ये खुद generate करता जाएगा. Whatever the number of your citation is there, you are developing or you are introducing, accordingly it will set itself down in the form of the list of references. Okay. Someone else is
working in the water resources sector, he don't need this type of format. Now this is the job of a one click ke format change kar lo. Go to the document preferences, and now for example I have journal of hydrology for water students, water resources management, or water, or I have different others. Click this style and OK, and see what happens here. It is a job of like one click you can see the style automatically, citation style of all references and complete references list. If I make it a little bit justify, it has been changed. So this is very interesting, and this, you people will enjoy while you are writing. Instead, previously you are in trouble just writing manually your references and just then changing it manually for commas, full stop, we can say brackets, and the number of journal, we can say the issue number, pages number. ये बड़ा मुश्किल होता है. Make it italic in some cases, and so on. So this is the job of the Zotero, which can automatically change your style within second. कोई और स्टाइल आप लेना चाहते हैं, लेट्स से मैं एक और पिक करना चाहता हूँ, वाटर का एक है. See, this is the job of one click, so you will enjoy. Let's see, I can have another one just for your to go through how it's dealing. It will change within seconds. Okay, just you can justify from here after selecting your go back, Control Z. That's only justification. अगर ये नहीं करा, select all and Control J कर लें, it will be justified and your job is done. And at the end, if there are some errors, what I was talking about, if because it is free and you have not got some areas which is required in the references list, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? इसको select करके या all document Control A and unlink citation from here. Once you unlink, then you can edit manually. It will not be updated. Manual उसमें काम करे और वो ऐसे ही रहेगा. But if it is not unlinked and you are adding new citation, all the previous editing you have manually done, that will automatically be updated, and again you will need it to update modify. So it's better once you have completed and you see there are some problem in the formatting and you want to edit it manually, so select all and unlink citation and then do your manual editing. Might be there are some problems. If problem are not there, okay, go with the same. So this is the charm, what you can do with the help of the Zotero. So if you have some question, almost your job will be done using up to this level. Might be there is a single or two students who will be interested how we can export the references list already available in the EndNote. So that's already the method I have shared in the slides. मैंने आपको वो बताया है कि किस तरह हम करेंगे वो यहाँ पे. फिर भी अगर आपको मसला है तो those students who are interested to in export and import from other managers, मैं उनके साथ वो कर सकता हूँ. These are all I have explained in these GG. सर ये क्वेश्चन है कि इस लेक्चर तो देखा नहीं है ये स्लाइड्स मैंने, लेकिन हमने काफी सारा काम एंड नोट से किया हुआ है ना. तो एंड नोट को अगर हम हटा दे दोबारा से इससे शुरू कर दे, बाकी काम इससे करे तो एंड नोट वाले रेफरेंसेस और वो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी. नहीं, वो तो सिंपल ये है ना कि अगर आप इसी से कर आसान काम कर रहे हैं, उसी का आप एक कॉपी ले लें, एक पेस्ट कर लें, ठीक है, और इसको इंस्टॉल करके उस रेफरेंसेस को लाएं, देखें कि वो अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है और आपने पहले से यूज एंड नोट, नो प्रॉब्लम. हमारा काम सिर्फ ये है कि ऑटोमेटाइज करना है सिस्टम को, रेफरेंसेस को, साइटेशन को. If you are okay with the end note, our job is okay. हम आपको छेड़ना नहीं चाहते. अगर कोई मेंडले में काम कर रहा है नहीं, he's okay with मेंडले, that's good. लेकिन for the beginner, what I have found, the Zotero is very easy and very like इसमें error मुझे कम मिले end note के मुकाबले में. That's why I'm preferring for this class to use Zotero. तो beginner के लिए मैं ये prefer करूँगा.
अच्छा सर, फिर ठीक है। उसमें है सर, उसमें मसले काफ़ी आते हैं, रेफरेंसेस में मैंने गलतियाँ। अभी तक यूज किया, लेकिन इन 2 वीक में मैंने इसको यूज किया और मुझे बड़ा इफेक्टिव ये मिला, इसलिए आई एम जस्ट प्रेफरिंग फॉर द स्टूडेंट आल्सो। ठीक है सर, थैंक यू सर। सही है। अगर उसमें आप ऑलरेडी आपने काम किया भी है, लेकिन क्या बात है, सारे उसको एक्सपोर्ट करें, इसमें मैंने तरीका ये बताया है। इसमें जी सर, जी सर। ये उसमें जाएं, एंड नोट में जाएं, उसके जी फाइल सर। पे क्लिक कर लें और फाइल से नीचे आए एक्सपोर्ट पे। ठीक जी है। सर। जी जी जब सर। आप एक्सपोर्ट जी सर। करेंगे, एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट आपको ओपन होगा ये। ठीक है। अच्छा सर। आपने जी सर। इन नोट की लाइब्रेरी के तमाम कंटेंट्स को किस फॉर्मेट में सेव करना है, ये आ जाएगा रेफ मैन। ये अच्छा खुद सर। लेगा नहीं लेगा, तो आपने इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से करना है रेफ मैन। सही ठीक है है। सर। और उस सही है लाइब्रेरी सर। को यहाँ से एक नाम दो, इसको डेस्कटॉप पे सेव अच्छा कर लो सर। या कोई कन्वीनियंट प्लेस पे सेव कर लो, लेकिन अच्छा होगा सर। किस में, रेफ मैन में। जब रेफ मैन हो सही जाए है तो सर। सेव कर लो, यहाँ सेव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जाओ, जोटेरो ओपन कर लो, जोटेरो में फाइल में जाओ, फाइल में इंपोर्ट पे अभी आ जाओ, वहां से एक्सपोर्ट हो गया, फाइल किसी जगह पे आपने सेव कर लिया। वो बड़ा अच्छा हल्का सर। फाइल होगा, उसकी साइज नहीं होगी, दैट विल बी स्मॉल केबी फाइल, राइट। अच्छा सर। फिर फाइल अच्छा में आओ, जोटेरो में इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट जो ही क्लिक कर लोगे, ये आपसे मांगे कहां से पिक करना है, तो आप अच्छा जाके सर। उसको जिस जगह पे सेव किया है उससे पिक कर लो, और जी सर। ऑटोमेटिकली ऑल दोज रिसोर्सेज विल बी पार्ट ऑफ जोटेरो। तो ओके सर। बड़ी जॉब नहीं है। अब एक एक वहां पे अगर ये अपडेट नहीं कर रहा है ऑलरेडी वर्कआउट इन नोड के पेज को, तो उसमें एक एक करके दोबारा इसमें जनरेट करो। इट विल हार्डली टेक यूर हाफ एन आवर, 30 मिनट लेंगे, ताकि आप दोबारा सिर्फ साइट 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 और साइटेशन से बिब्लियोग्राफी तो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, तो दैट विल नॉट बी अ बिग डील। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी ओके। मच। यस सर, Okay, थैंक यू सर। anyone else who has some problems? So far we have discussed about Zotero, because you have to apply it for your first assignment, which is shortly coming in your inbox. सर एक दफा हमें साइटेशंस को ऐड किया तो उसमें एडिटिंग कैसे करेंगे सर? Citation अगर ऐड के डिलीट कैसे करना है? डॉक्यूमेंट्स में हमने वो किया ना, रेफरेंस दे दिए हैं, तो फिर उसको एडिट कैसे करेंगे? मतलब मैंने एक डिलीट करना है इसमें। अच्छा, इसमें एक डिलीट करना है, तो उसके जी लिए जी सर। सिंपल काम ये है, ये देखें, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। सिंपल ये है कि फर्ज के यहाँ पे मैंने इसको, मुझे पसंद नहीं वो द प्रीवियस साइटेशन और साइटेड वर्क और साइटेड ऑथर आई वांट टू रिमूव। ठीक है। तो डायरेक्ट क्लिक से इस पे कुछ भी नहीं हो रहा है। कैन यू सी माय कर्सर? मैं इस पे क्लिक कर रहा यस हूँ बार सर। बार। यस सर। सिंपल उसकी ये है कि जस्ट क्लिक इन एनी एरिया ऑफ दी साइटेशन एंड एड रैंडम अनदर वन। सिर्फ एड की कोशिश करें। हैव यू सीन? यस सर, यहाँ से करेंगे। हुआ। अब इसको डिलीट करना, जो जो आपको चाहिए वो दोबारा यहाँ पे ऐड कर लें, इट विल बी अपडेटेड। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखिए कर्सर बैक मैंने कर लिया, ये। यस सर। तो दोबारा उसको जो भी आपने ऐड करना है दोबारा उसको सर्च कर लें, जो चाहिए आपको वो कर लें, बाकी अब अपडेट हो जाएगा। ये मैं 2 नाम पिक कर लेता हूँ लिस्ट से, ये मैंने कर लिया और एंटर, तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा। ये देखिए नीचे ठीक रेफरेंस है। लिस्ट पे ऑटोमेटिकली इसने उड़ा दिया, जो मैंने ठीक है खत्म सर। करने थे वो हो गए, ये अपडेट हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी और का कोई और है प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर आपने कहा था कोई रशियन वेबसाइट का जी, वो पीडीएफ को किसी आर्टिकल को ओपन करने के लिए गूगल स्कॉलर पर आपने कहा था वो शेयर हाँ हाँ करेंगे, हाँ हाँ। तो काइंडली अगर वो शेयर कर दें सर। और किस तरह, मैं समझा नहीं कि किस तरह? आपने कहा था कोई रशियन वेबसाइट है जिससे हम गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स को हम मतलब ओपन कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि ओपन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हाँ, नहीं है। लेकिन नोट कर लें, लेकिन ये वैसे एथिकल कोड के खिलाफ है, हम नोट कर लें। ये जी सर। स्क्रीन हमारा चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है। अब करंटली जो एक्टिव है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, साई हब .pw, ये दे दें सिंपल। स्क्रीन आपका वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है। ये सर। ये देखें क्या आएगा आपको, और मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह आपने इससे पिक करना है, कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एट होम यू कैन नॉट एक्सेस सम आर्टिकल्स, वो किस तरह ये आपको फ्री
ला के देगा। मैं Okay, sir. प्रीवियस जो हमने विंडो ओपन किया है, लेट मैं आर्टिकल को पिक कर देता हूँ। लेकिन इसमें ये कि टाइटल एग्जैक्ट आप एंटर करेंगे या उसका यूआरएल जो है, जो वेब लिंक है। यूआरएल से मेरा क्या मुराद है, मेजॉरिटी को समझ आ रही है। वाटर मॉडल्स, थोड़ा सा मैं एक पे जाऊं। ये फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि कोई आर्टिकल है ये भी थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि वो आर्टिकल है, उस पे आप क्लियर हो। लेट्स सी, ये स्प्रिंगर वाला एक, होपफुली दिस इज आर्टिकल, यस दिस इज आर्टिकल। तो ये देखें, माय स्क्रीन इज शेयर, कैन यू सी? Yes, sir. सवाल जस्ट क्लिक दिस यूआरएल, यू कैन सी द टॉप वन। मैंने उसको क्लिक किया, ये वाला। Yes, sir. ओके, और इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी कर लें एंड गो टू दैट लिंक, और वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर लें। यहाँ पे मैंने टाइटल कॉपी नहीं किया, उसका यूआरएल कॉपी किया, ठीक है। Okay. एंड देन ओपन, यहाँ से ओपन पे क्लिक कर लें एंड इट विल ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह मोर देन 90% जो है ये आपको बड़े पुराने आर्टिकल भी यहाँ पे ओपन कर देता है। इसको डाउनलोड कर लो फिर यहाँ से, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir. यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये वाला सिंबल, Yes. डाउनलोड। फिर ये डाउनलोड कर लो, कोई भी है। अब दूसरा आपने करना है तो उसको बैक कर लो, गो बैक। एक डाउनलोड आपने कर लिया, गो बैक हो जाए। कभी कभार इस पे कोई वो आ जाता है, कोई कोड आ जाता है, तो वो कोड आपने एंटर करना है। जैसे वो चाहते हैं कि यू आर ए नॉट ए रोबोट, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, इस तरह का कोड आ जाता है। तो जैसे एंटर दैट कोड एंड यू विल अगेन हैव दिस वेबसाइट। कोई भी दूसरा आर्टिकल आपने करना है तो उस पे जाओ। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, जस्ट कॉपी दिस टाइटल, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी हो, और फिर उसमें जाएं एंड पेस्ट इट हियर। ना मैंने यूआरएल की बजाय टाइटल पेस्ट किया, तो अगेन इट विल ब्रिंग योर सर्च एंड योर मॉडल व्हाटएवर यू आर इंटरेस्टेड इन। अच्छा, इससे अगर किसी वेबसाइट से आपको ये डीयूआई नहीं है, डीयूआई, Yes, sir. ये डीयूआई भी किसी जगह से आप कॉपी कर लें और इसमें पेस्ट कर लें, तो अगेन इट विल सर्च थ्रू इट, ये निकाल लेगा। किस तरह, अगर इसी में डीयूआई है, ये अक्सर आर्टिकल में होता है। End में होता है, sir. कभी start. ये स्टार्ट में मोस्टली यहाँ पे मेंशन होता है, मैट्रिक्स, ये साइट। ओके, यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको डीओआई किसी जगह से किसी आर्टिकल का मिल रहा है, तो इवन यू कैन साइट विद द हेल्प, सर्च विद द हेल्प ऑफ दैट डीओआई, आपको ये ला के देगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you. अच्छा, बुक्स के लिए ये है जेन लिब, ऊपर से ये शेयर हो जाएगा, gen.lib.rus.ec, ये ओपन हो जाएगा। इसमें अपनी मर्जी का कीवर्ड दे दें। फॉर एग्जांपल, मेरा वाटर रिसोर्सेज का है, तो मैं लिखता हूँ हाइड्रोलॉजी। मैं कोई बुक हाइड्रोलॉजी से मुतालिक सर्च करना चाहता हूँ एंड एंटर। इट विल ब्रिंग मल्टीपल वेबसाइट, यू कैन सी। अपनी मर्जी का टाइटल इसमें देख लें, कोई आपको जो बाहर आए, जो भी आपको लग रहा है एग्जैक्ट, अगर टाइटल आपको याद है तो वो उसमें लिख दें, शायद आपको मिल जाए। अब मोस्टली मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे इसमें। लेकिन कीवर्ड से सर्च कर लें एंड देन सी, यू विल फाइंड माइट बी अ फ्यू योर इंटरेस्ट डिफरेंट बुक्स। इसमें जो भी साइट उस पे क्लिक करना है, एंड देन आफ्टर दैट you have to go, mostly I will prefer this Z library का लिमिट है, when you download around about 5 or 10, तो ये स्टॉप कर देता है, then it is good। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, ये वाला। and you just get it and download will start। It's okay। Okay, sir. तो इस तरह आप, ये आपका बुक्स का वेबसाइट है, आपको मोस्टली मिल सकती है, लेकिन आर्टिकल वाला मोर देन 90% वो बड़ा सक्सेसफुल है, ठीक है। Thank you, sir. ओके, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? ये डाउनलोड का पैनल आ गया मेरे सामने, जो बुक था। सर, ये Zotero से जो PDF फॉर्म में जो आपने कहा कि सेव होगा, वो PDF में क्या सेव करेगा, सर? लिंक पीडीएफ सेव? में उसको एग्जैक्टली आर्टिकल को ही सेव कर लेगा, लेकिन हम प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि वो इसमें लिमिट 300 है, तो Yes. इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। आप
इस दूसरे फोल्डर को यूज करके पीडीएफ बैकअप रखें, लेकिन एटलीस्ट इसमें पीडीएफ बैकअप ना रखें। मेरा मकसद वो था। ओके सर। ताकि इसका जो बैंक है, डेटा बैंक है, लिमिट है, वो फिल ना हो जाए। ठीक है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन बाय समबडी एल्स? एवरीबॉडी इज ओके विद Zotero? यस सर। यस सर। ओपन कर लें, माइक Yes, sir. ओपन कर लें। किसी को अगर कोई इशू है तो वेलकम, अदरवाइज हम वाइंड अप करें। हाउ वाज द क्लास? थोड़ा सा देख लें कि बैठे भी हैं लोग या नहीं। जी सर। सदीक ऐसे ना हो कि लेक्चर लगा के वो उधर तकिया सरहाने रख के सो गए हों। ये एजाज वास्ते में है सर। थोड़े से जो अवेलेबल है, अगर आपका ये वीडियो आ तो मुझे पता चले कि किस स्कूल में राशा सलाम जो है वो बैठे हैं। एजाज की वीडियो ऑन करो सर। वीडियो सारे आप ओपन कर लें 1 मिनट के लिए। जी सर। मुझे पता चले फोरम की तरह कौन बैठे हैं और जरा ओपन कौन बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ ये चेक करना था कि ये देखें कुछ एक आध इसमें वो लेटे हुए थे। अलग नहीं रहा होते। लेटा हुआ है। अच्छा, ये वगैरह जो है। ओके, हाउ वाज द क्लास ओवरऑल? अगर आपने क्विकली आप मुझे थोड़ा सा हाउ वाज द क्लास, कुछ सीखा होगा? इंटरेस्टिंग सर, सब कुछ सीख लिया। सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। हमारे बाकी क्लासेस लेने की फायदा नहीं होगा, सब कुछ सीख लिया आपने। नहीं, आज जो पढ़ा है सर वही सीखा। ये अभी नहीं सर। एहतराम क्लास बड़ा लेंथी था, इतना नहीं होना चाहिए। हमारी इतनी कैपेसिटी है, हम इतनी क्लास नहीं। अदर बाकी हम क्लास की ड्यूरेशन जो है कम करेंगे, इसलिए ज्यादा था, इसलिए Zotero इसके लिए दुआ बाकी हमने स्टॉप करना था। You have a question? Okay, no question, then we are winding up. No questions. Okay, next time we will reduce the class time. यहाँ इसलिए ज्यादा हुआ कि हमारा ये Zotero आज डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्लासेस short time. Karam, don't worry about this. If you can hear us, आप बता भी सकते हैं. We can understand the class is lengthy, but next time we will keep in mind. Okay, और हम आपको इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं, मायूस नहीं करेंगे. उम्मीद है सर इंशाल्लाह. उम्मीद है. Okay, wish you good luck. Thank you for your presence. थैंक यू आपको थैंक यू. असाइनमेंट आ जाएगा, ठीक है, और ये लेक्चर भी आ जाएगा हार्ड में. ओके. अस्सलाम वालेकुम.